हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 93। इसमें हमें शॉर्टहैंड का एक पैसेज दिया है जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। मैं इसको स्लोली रीड करूंगी सो दैट आप भी मेरे साथ साथ इसको अच्छे से रीड कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैम्बर्स of commerce are to be found in the chief centers of the country. They take in hand the collection of information for both importers and exporters, and they gather in their files wonderful facts and figures dealing with matters of importance to their members. There are usually different sections under different chairmen for different trades, such as the leather trade, and these sections naturally endeavor to centralize their efforts on the particular business in which their members are engaged. The chambers keep a watchful eye upon legislatures so as to enter an early protest against any legislation likely to hinder international trade. One chamber took the rather unusual course of acting as trustees for debenture holders of property in a foreign country. The present writer is not aware of another instance of this wonderfully useful service by a chamber of commerce. Stop. ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।